got this. लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आरओजी शोडाउन सीरीज वैलोरेंट लीग के सेमीफाइनल्स नंबर 2
I am Manasvi, and with me I have Tarun on the desk today, and we are going to be taking you on a journey of Medal Esports versus Lethal Esports in the semifinals number two. So, Tarun, are you excited for today? I mean, yes, because you have just named Team Lethal Esports, one of those upcoming T1 teams in Indian Valorant scenario, especially. And if we talk about the start of Medal Esports, yes, we have Badman, we have Easy, we have some of the most talented players from our region. So I'm really looking forward to see कि कौन सी टीम आज के दिन यहाँ पे ग्रैंड फिनाले में अपना स्लॉट दर्ज कर पाएगी. This is the semi-finale to let us remind our viewers. And कल के दिन टीम एल्स्ट्रिक और रेकनिंग में से रेकनिंग esports ने ऑलरेडी अपनी जगह बना दिया है. तो आज के दिन which team is it gonna be? We'll have to see. But till then, I'm really excited to see the prize pool as well क्योंकि सारी टीम यहाँ पे compete तो कर रही है for the title of this amazing tournament. But there's a monetary value as well. We have a total prize pool of 1 lakh rupees followed by which the number one team जो कल के दिन ग्रैंड फिनाले में जीतेगा उनको 70,000 का प्राइज पूल मिलेगा. बट nonetheless जो यहाँ पे सेमीफाइनल्स भी जीत जाएगा उनको एटलीस्ट वो सेकंड लाइक पायदान का प्राइस पूल तो यहाँ पे हासिल करने का मौका मिलेगा. Oh, definitely, definitely. And since we are talking about these players who are going to be fighting it out for this prize pool, let's have a look at the teams that have so far fought in this series and are going to be going ahead as well. So, आज fight out करने वाले हैं Lethal Esports and Medal Esports, and कल के दिन होगा the grand finale. Reckoning Esports, I think they are just ready and they are going to be having a watchful eyes over today's match as well, Tarun. Yep. I believe this is going to be one great matchup between both the teams. I mean, potentially एक grand finale का match ही मैं तो कहूँगा क्योंकि ये जो दोनों teams है ना, these are really the teams who come up with experience. एक होता है कि आपका skill set बहुत ही ज़्यादा heavy usage हो, आपका fire power एक अलग ही level पे, along with your team coordination, which brings you here till semi-finals. But this is where things get tough. सेमीफिनाले एक BO3 का सीरीज रहने वाला है. ये BO3 के सीरीज में दोनों टीमों को मौका मिलेगा कि वो अपने साइड से अपने मैप पे अपने रिस्पेक्टेड मैप साइड पे अपने लाइक मैप पे जरूर जीत पाए. इन केस पहला मैप भी नहीं जीते तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि उनको बाकी के मैप्स में यहाँ पे जीतने का मौका मिलता है. एज यू हर्ड मी, इट्स अ BO3 सीरीज. द फर्स्ट टू क्लाइम अप द स्टेयर्स टू टू मैप विन इज गोना बी द वन जो इस सीरीज को अपने नाम करके ग्रैंड फिनाले में जगह बनाएगा. Bilkul. And since we are talking about these teams, I actually am excited to see what lineups and what maps are these teams going to be playing today. Because, and here we go, the team lineup for Oh, Medal okay. Esports is going to be easy, Badman, Godvexy, Buster, and Tricky. Yep. That's a great addition, I'll say. The addition of Tricky is something which is going to be quite amazing because you have that initiator role now. You have Badman alongside Easy and God Vexy. Let's hope that he is really popping off those heads today. Buster भी हमें यहाँ पे जुड़ते हुए नजर आएंगे. तो Medal Esports का playing five मुझे बहुत ज़्यादा interesting लग रहा है. But before we hop on to Lethal Esports, I'm just waiting to see कि क्या Marzel के साथ साथ यहाँ पे Sensei देखने को मिलेगा. जी हाँ, Marzel, Sensei, Lucia, Android, and Rafa. These will be the playing five, and I'll say both of these teams, they have really been quite competitive if you even look after their previous match history. Lethal Esports अभी अभी लेट हो रही है हमारे मार्जल के द्वारा, and Marzel is someone who really has the experience back in the day, like he has started his grind off with the CSGO. तो I really hope कि ये grind, ये सारी मेहनत उनको इस मुकाम पे लाने के बाद जरूर एक बहुत अच्छा competitive edge देगी. Talking of which, we have the side of Android as well, and he is someone who is really looking quite powerful in those Sentinel controller agents. So, each and every agent pick is also going to be that important. But what's more important is that what are the veto results? Definitely. And let's see what is going to be the first map to be banned. It's going to be Haven. Oh. I mean, this map is usually banned, but Medal Esports is going to be the one to be banning it. The second map that is going to be banned is going to be Icebox from Lethal Esports. That's ban or pick. Okay, that's another map being banned from the side of Split. I think Lethal should take an opportunity to ban Breeze at this point of time
Banning Breeze would give them an advantage, and yes, they have done that. Lethal Esports goes for a Breeze ban because they know these verticality differentiative maps are really not something which you would want to rely on, especially when you have such a high power. If it's Middle Esports, yes, it's going to be the pick of Bind. Can we see an Ascent as a pick? Because Ascent team Lethal Esports is quite overpowered, and if they really pick Ascent, that's going to be amazing. But I think that's just there for the decider map for now. Team Lethal Esports, they had the opportunity for a map pick and they rather choose to go with a fracture, and then Middle Esports get to decide to defend at the map of ASIN. Now things are really interesting because if you want Team Middle Esports to win, they definitely need to secure the first two map, because in case it goes to ASIN, Team Lethal Esports has a very high percentage of win ratio. Meanwhile, in case Team Lethal Esports want to win, just one of two maps would be good enough for them. Maybe a good start with a 1-0, or maybe Fracture, which is their own map pick. But after looking after the map, Vito, what are your thoughts on that, Manasvi? I definitely think Fracture Pick was very unconventional. It's a map that we see that people love to hate. It's the first map to be banned usually. So it's a very unconventional pick, and I'm very excited to be seeing these teams to fighting out on it. Yep, surely. And I think Middle Esports, they are going to get a tough time, but they are, maybe one map overtime is something which I can really expect, because Middle Esports, they have that upper hand advantage. They have their own map pick, and because you have your own map pick, that too at the map of Bind. Bind is a map where you cannot deny the fact that Jet is totally being replaced from the side of Raze. We have Chambermains who can come in inside this band माइप एंड इसी के साथ साथ आई बिलीव कि इनिशिएटर्स का भी रोल अदा करने के लिए मार्जिल को अभी थोड़ा स्विच करना पड़ेगा अपने मेन एजेंट जो कि है फेड पे. एंड्रॉइड गोइंग ऑन फॉर योरू. Okay, Brimstone is still fine. Sensei comes up with a jet. There's no chamber from the side of Lethal Esports. A double duelist composition plus a double initiator, zero sentinel. Is it gonna work for them? Because they are the defender and they need those sentinels to hold on the side for long. Oh, definitely. But actually, in yesterday's matches, we did see a double sentinel, double initiator setups with no duelist, and that too kind of worked out for them. So I'm very excited to be seeing this unconventional lineups that Lethal Esports is going in with. On the other hand, we have already a pick of Chamber and Sky and Raze from Medal Esports. Buster and Batman still thinking about their picks. Maybe Buster goes in and locks on that breach. And I think that's going to be just Brimstone for Batman now. And there we go. We have our lineups ready, and it's time to get rolling in the match. Yup, man, let's start the match as it's going to be the deserted map of Bind, where we are going to be seeing Team Metal Esports go up against the side of Lethal Esports. As I told, the winner, he progresses with a 1-0 advantage. Like, the first point will be there for their side if they have ever to witness a third match. In a BO3 series, often we get to see those third matches, and especially when it's the side of Team Lethal Esports competing up against Metal. For now, let's directly hop inside the match and let's see the inventory that what are the players choosing to go with. As we know, Team Lethal Esports is at the defensive side. I do believe these narrow streeted map अक्सर ऐसा like situation बनता है कि आपको यहाँ पे वो नजदीकी angles को clear off करना बहुत ज़्यादा attacking side से मुश्किल होता है. Now because that is a big difficulty, things would be really easy for you if you just get up and make sure कि आप अपने वो double initiators का पूरा फायदा निकाल रहे हो. Lethal Esports Sentinel ना हो तो एक problem भी है, but at a post plan situation, those double initiator could help to get an easy retake. डेफिनेटली एंड सिंस मुझे लगता है यहाँ पे सेंटिनल्स नहीं है इनके पास उनकी एक स्ट्रैटेजी होगी कि दे विल ट्राई टू बी द फर्स्ट वन टू गिव द पीक दे विल बी द वंस टू ट्राई एंड टेक दैट फर्स्ट किल so that they have that man advantage, because without sentinels locking down to the site would be a little difficult for them, and obviously with initiators, with the number of flashes they have, getting those picks will be definitely easy for them.
Yup, I'll surely agree with you on that. And if those aggression are being the play, you're gonna see eventually defenders attacking and attackers defending the defenders, because they have to make sure कि जब वो double initiator, which is Sky, at the same time you have Fade, वो सारे अगर agents आप पे पूरी तरीके से यहाँ पे pressure बनाना चाह रहे हो तो उसको counter करने के लिए what are you having? First thing, you have a trademark, but that's only limited to one. Second thing, you have a paint shell, जो कि है आपका रेज एजेंट का, बट पेंट शेल इज योर सिग्नेचर एबिलिटी विच यू डू नॉट वांट टू जस्ट गिव अप एट ईच एंड एवरी स्टार्ट ऑफ द राउंड, क्योंकि एक बहुत यूजफुल मैं कहूँगा सिग्नेचर एबिलिटी है. वेन एवर यू गेट सम किल, इट्स अ बिग एडवांटेज फॉर यू कि 2 किल के बाद वापस आपको आपका पेंट शेल वापस मिल जाता है. प्लस टू टॉप थिंग्स ऑफ अ ब्रीच एडिशन, I believe that's the difference maker. If Team Medal Esports ever managed to take down a round जो उनके हाथ में नहीं था, वो रहेगा ब्रीच एजेंट के वजह से. फॉल्ट लाइन्स, रोलिंग थंडर, the aftershock, and then you have the flashpoint. These four ability could be just game, I'll say game changing for lethal esports, because you are not seeing सोआ को छोड़ के बाकी सारे इनिशिएटर्स फिलहाल हमें कायो के अलावा देखने को मिल रहे हैं अभी इस मैप पे. बिल्कुल, और जैसे हमने बात करी थी अग्रेशन डेफिनेटली देखने मिलेगा हमें लीथल ईस्पोर्ट्स की तरफ से, एंड वही हम लोग देख रहे हैं. एंड्रॉइड इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन टू बी गेटिंग अ किल ऑन इजी. मार्शल गेट्स वेक्सी, बट दिस इज गोइंग टू बी अ डबल किल कमिंग फ्रॉम मेडल ट्रिकी. नॉट फॉर लॉन्ग, राफा इज गोइंग टू एंड हिम इन हिज ट्रैक्स, एंड बस्टर इज राइट देयर टू ट्रेड इट आउट. सो इट्स गोइंग टू बी अ 2v1 सिचुएशन. बैडमैन इज ऑलरेडी ऑन द साइड. Will he be able to get the spike down is a question. A 2v2 situation will be taken down to a 2v1. Now we just have Buster fighting it out for himself. Inside gets taken down. Buster still going in for that, and a beautiful shot on Lucia. And with that, Medal Esports is going to be the one to put the first point on their scoreboard. That's a brilliant start from the side of Team Lethal Esports. What a start getting those 2 frag. It was then a 5v3 scenario unless they realize that they are just losing out to that advantage. मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बस्टर पोस्ट प्लान सिचुएशन पे गए भी नहीं थे. Yet they forced out Team Lethal Esports कि वो अपने कंफर्ट जोन से है, वो सिटी एरिया से बाहर है, and then they come up to take those 1v1 duel. 1v1 duel में जितनी स्ट्रॉन्ग हमें टीम मेडल ईस्पोर्ट्स नजर आई है ना, उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम रहने वाली है. बट रेस का फिलहाल बूम बॉट आपको जाते हुए देखने को मिलेगा. राफा takes this opportunity to get a blind, but Ricky is gonna be smart enough to flick his POV to another side, and blind को कैसे भी डॉज करके उन्होंने राफा को यहाँ पे डिनाई किया. A big breakthrough, because that's a duel is being taken down from the side of Team Lethal Esports, जो यहाँ पे अग्रेसिव आना चाह रहे थे. बट वेल, एक 5v4 सिचुएशन है, अभी भी इजी के पास मौका है कि वो एक और एक पिक यहाँ अपने नाम कर पाए. He has those head hunters. एंड्रॉइड की बात करें, शॉर्टी वेपन लेके होल्ड कर रहे हैं, एंड मार्शल इज यूजिंग दोस प्रॉलर. अब मुश्किल बन सकती है. जी हाँ, इसी के साथ इजी गेट्स अनदर फ्रैग. दैट नाउ दे आर डाउन टू अ 3v5 सिचुएशन. Oh, Bilkul. On the other hand, Lucia actually gets tricky this time, and that too with a shorty. Very, very cheeky angle was held by him. Abhi, this is what you're talking about, the aggression. See, Lucia could have just held on to his gun, waited for the push to come in, but nope. He is actually on a hunt right here. And on the other hand, Batman gets taken down, but Vexy is going to stop Lucia's lurk right there. We have the spike down now. It's going to be a 3v1 situation. Android all by himself with a little shorty in his hands, and he's been spotted. तो ज्यादा वक्त तक वो नहीं टिक पाएंगे is what I'm guessing, and that is going to be true. Buster is going to put a bullet in his head, and a second point for Medal Esports. Oh man, that was indeed a strong round coming in from the side of Lethal Esports. Managed to take off 2 Spectres off the hands, but Buster on the other hand, he's looking in a good form. And in the beginning, I did told that if there's ever to be a difference maker for Lethal Esports or a round changing situation, it's the breach itself. And you have to give that respect to breach at times. जब आप एक ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ पे वो फॉल्ट लाइन आने का सिचुएशन बन सकता है. Well, round number 3, पहला बाय राउंड है. Lethal Esports cannot in the world afford to lose this. But what are we seeing? Sensai को already down किया. That's a potential vandal जो retrieve कर सकता है. And what? देखते ही देखते Android भी down. यहाँ पे आपको rolling thunder का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है.
इसी के साथ पूरा साइड कंट्रोल अब टीम मेडल स्पोर्ट्स को मिल चुका है। लीथल स्पोर्ट्स का पहला बाय राउंड है, पोटेंशियल है कि वो अपने साइड से ये एक क्लच सिचुएशन पे तब्दील कर पाए। 3v5 है तो मौका बन सकता है आउटनंबर होने के बावजूद, बट इजी उस चीज को होने नहीं देंगे। राफा को डाउन किया जाएगा। दिस लीव्स अस विद ओनली दो प्लेयर्स जो कि होंगे लूसिया। मार्जल गेट्स टेकन डाउन, लूसिया डाउन ऑन अ 1v4, but well, he was good for one, gets down and traded to Buster, and Buster yet again with that investment of Rolling Thunder manages to get another third round. थर्ड राउंड नहीं, मैं कहूंगा कि ये तो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज ही बनते रह जाएगा, बिकॉज अब लीथल स्पोर्ट्स को थोड़ा इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज होगा। Definitely, or वो economical disadvantage is going to last for at least a couple of rounds. So well, let's see ki what is going to be their next move, because we are seeing them playing very cheeky, very aggressive angles, and it hasn't been exactly playing their ways. So I think it might be time for them to tone it down a little. We're seeing our Sky guarding on to Hookah, towards Hookah, and we definitely know for the fact कि push आ रहा है B की तरफ से। यहाँ पे the Prowlers have managed to spot out of multiple people. Marcel gets a kill on easy, and these guys are definitely aware of the fact that push that is coming towards their way. Rafa, will he be able to take that one? Yes, he'll be taken down, but trade is coming right his way. Sensei holding on to his angle will be taken down by Buster. Bexy goes in for another kill, so it's going to be a 3v1 situation. Again, Android left all alone to clutch Wow. a nearly impossible situation. Wait a minute, you know what he did? He just made sure कि वो अपने टीपी का इस्तेमाल करके टेलीपोर्टल पे बेट करते, मीनवाइल वो सीटी से पूरी तरीके से आए। दिस लेफ्ट द ओपोनेंट्स क्वाइट इन अ क्वेश्चनेबल सिचुएशन, बिकॉज वो उनको हुक्का पे आने के लिए एंटिसिपेट कर रहे थे। व्हाट अ बिग ब्रेन योरू प्ले कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ एंड्रॉइड, एंड ये योरू प्ले बहुत ज्यादा नीडेड है, बिकॉज आपने एक डुएलिस्ट में रेस के बजाय जेट को पिक किया, एंड इफ यू हैड अनदर सेंटिनल यू रादर चूज टू गो अप विद अ योरू। सो यू नो यू रियली नीड टू मेक श्योर कि योरू के वो सारे फ्लैशेस, वो सारे के सारे यू नो मैं कहूंगा एडवांटेज, दोस एबिलिटी आर रियली बीन ब्रॉट बैक टू द एडवांटेज। फाइनली आफ्टर लूजिंग 4 राउंड्स दे हैव देयर फर्स्ट बाय राउंड। ये बाय राउंड अगर जीतते हैं तो मैं कहूंगा एडवांटेज है, बट हारते तो उतना ही बड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज उनका लॉस बोनस आपको रीसेट होते हुए नजर आएगा। Oh, all right. And again, an ambush towards B side is what we are seeing. Tricky, he knows for the fact that there might be a hold towards Hookah. Will try to use his patience to drive the enemy away. And I think this is going to be a push again towards long from the side of Lethal Esports. Will they be successful to get even one kill is the question. Tricky, on the other hand, takes Sensei down and will get into the side, gets a Marzel and gets traded out by Rafa. But would that be too late? Rafa gets a kill on easy. Buster is going to be the one to blind out Rafa, get a kill as well. And Badman already entered the side, gets a kill on Lucia. It's a 1v3 situation again for Android. But not for long. Android is going to be taken down. 5th swift round for a Middle Esports. Tarun, I mean, मुझे तो अभी लग रहा है it's getting more difficult by the time for Lethal Esports right now. 5 consecutive rounds उन्होंने lose की है. 2 bye rounds they have missed out. I mean, they look like they are in grave danger right now. Yep, and that too I'll say कि डिफेंसिव साइड जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत क्रूशियल साइड होता है कि आप अपना एडवांटेज इसी साइड पे निकालें। अगर आप यहाँ पे हार रहे तो वो कमबैक भी सेकंड हाफ पे इसी मैप पे आता है। मिडिल Esports, even after they start to lose each and every round from this point of time, वर्स्ट केस सिचुएशन पे भी एक 7-5 का स्कोर लाइन आपको देखने को मिलेगा। एंड बिकॉज आई एम सेइंग दैट बिकॉज यू हैव दोज मेनी अल्टीमेट ऑनलाइन, आपके पास सीकर्स ऑनलाइन है, आपके पास नाइटफॉल ऑनलाइन है, आपके पास डायमेंशनल ड्रिफ्ट फ्रॉम योरू ऑनलाइन है। प्लस टू मेक थिंग्स करेक्ट, ये राउंड भी जीत सकते हैं वो, क्योंकि उनका बाय जरूर नहीं रहेगा, बट सेंसाई के पास वो ब्लेड स्टॉर्म जरूर है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं बखूबी से। ऑन काउंटर टू दैट वी हैव मिडिल Esports जिनके पास यहाँ पे आपको टूर दे फोर्स अल्टीमेट ऑनलाइन देखने को मिलने वाला है। सो ऑल दे नीड is just a post plan situation, and because you are giving them the post plan situation they are making it difficult to retake। because हमने expect किया था डबल इनिशिएटर में शायद एक अपर हैंड रहे, well that's a no, because डबल इनिशिएटर मिडिल Esports के पास भी they have Brim, they have Chamber, plus on top of that they have Raze as well। तो इतने हैवी मैं कहूँगा लाइक
strong agents के साथ, it's very difficult for lethal esports to just counter them with a Sky, Yoru and like Fade. If a Sentinel was to be played, तब मौका बन सकता था. बट चलिए राउंड की शुरुआत ये होने वाला हमारे आज के दिन का 6th round for the first map indeed for semi-finale number 2, and Sensei is up with the Blade Storm and the 5 hopes which he has in his hand. Sensei थोड़ा आगे खेलने का प्रयास कर रहे हैं. एक फर्स्ट ब्लड भी अगर यहाँ पे मिलता है तो मौका बन सकता है, बट मेडल ई स्पोर्ट्स जानती है उनके ओपोनेंट के पास इतना अच्छा एडवांटेज नहीं है. उसके बावजूद देखिए कितना अच्छे से लाइक मैं कहूंगा दे आर गिविंग देम द रिस्पेक्ट to make sure that they just don't mess up this one round where they have all the advantage. Fault line का यूज आपको देखने को मिल जाता है. Sensei is at an aggressive position. Meanwhile, Android he popped one headshot with his amazing sheriff, but was only good for one. Easy उनको down करेंगे, and the numbers advantage is now for the side of Middle Esports. बिल्कुल एडवांटेज तो उनके पास ऑलरेडी है एंड द मैन एडवांटेज इट्स गोइंग टू बी मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर Lethal Esports to retake this or maybe not. The Buster is going to go down. The man advantage with that also goes down. Now Rafa, he knows for the fact that he has a couple of angles to check. Easy might just be sneaky enough to push that smoke. Oh, bad movement sound and it might be bad, but no, a counter coming in from Batman takes down Rafa. Now Sensei is the one who is going to get concussed, taken down by Easy. Easy puts an end to the round by a kill on Lucia. Again, a beautiful round for Medal and a lot of disappointment for Lethal Esports. Yep, I think Madman, if he would have lost this 1v1 duel, things would have been interesting. And अगर सेंसाई को वापस रनकश नहीं किया जाता ट्रेल ब्लेजर के द्वारा, तब वो मौका बन सकता था. बट यू सी ईच एंड एवरी फैक्टर दे आर क्वाइट फेवरिंग मेडल ई स्पोर्ट्स. हर एक वो क्रूशल समय पे मेडल ई स्पोर्ट्स ट्राई टू स्टेप अप. आई डिड टोल्ड कि अगर वो एक राउंड हारते तो उनका लॉस बोनस पूरी तरीके से रीसेट होता है. एंड सी दैट्स द रीजन वो यहाँ पे हारे नहीं, बट उनका लॉस बोनस इतना है कि अभी भी एक बार राउंड पूरी तरीके से अफोर्ड कर पा रहे. अग्रेसिव प्ले एक बार फिर एंड्रॉइड के द्वारा. राफा ट्राइंग टू टेक सम शावर कंट्रोल. इंसेंडनरी is limiting him off to make sure कि वो ज्यादा अग्रेसिव ना हो. बट ट्रेल ब्लेजर के साथ साथ शुरुआती 20 सेकंड में ही उन्होंने बहुत ज्यादा यूटिलिटी का बेट आउट कर लिया है. Ooh, that push finally worked out for Mazel. He's got a kill on Easy. But usually this is what happens. Lethal Esports की तरफ से एक aggressive push आ जाता है and then they get a kill, two at the max, and the things start rolling out on the opposite. But this time I think Mazel very smartly takes a kill, not being too aggressive. He's just holding on to the side, making sure he gets all the information that he needs. Tricky knows for the fact that there's an enemy just around the corner. That blind along with that satchel is going to be death of Rafa, and I think this is going to be a sight for Medal Esports. And again, a rolling thunder coming in from Breach will be making sure that the spike goes down and the side stays in control of Medal Esports. Medal Tricky gets a kill on Android. Badman gets a kill on Sensa. Marzil, though, he takes one down. He has 3 more to go. Oh, that's not happening. Badman, he just takes him down. I mean, this was very doable since Vexy was barely on any HP. But again, it's just Medal Esports showing that they are the better team here. Surely, man. And as their map pick suggests, but is the map pick, Team Lethal did had a defensive advantage, but that seems to be not the case. And जैसे आपने mention किया था कि पहला pick आपको मिल जाता है, you're even good for 2. But the problem is about the later half of that round जहाँ पे आप पूरी तरीके से आप बस बिखरते हुए नजर आते हो. Cause Medal Esports is rushing in like a team. They are playing in like a team, and सारे के सारे players अगर down भी होते हैं तो they have enough time to make sure कि वो एक player भी 3K 4K निकाल के वो पूरे loss को recover कर पा रहे हैं. Lethal Esports थोड़ा सेमी बाय उनके साइड से हम यहाँ पे अभी के लिए देख सकते हैं. एंड्रॉइड के पास सिर्फ एक शेरिफ है. He has a sheriff, dimensional rift उनका ऑनलाइन है. फेट का भी हमें अल्टीमेट ऑनलाइन नजर आ रहा है. बिकॉज दे आर लैकिंग अ बिट ऑफ दोज वेपन, तब थोड़ा मुश्किल बन सकता है. बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये एक थ्रिफ्टी राउंड में भी कन्वर्ट होता है तो. Bilkul. And oh my god, the teleport couldn't have come on a better time. That just gave away his position to Easy. So Easy is going to be well aware of that fact. And I think that's going to be a rotation towards Ace shot. We saw
rotation coming from Shower's side. Let's see if Middle Esports manages to take a successful first kill and get inside the site. ओके सो देयर वी गो नाइटफॉल कमिंग इन एक बहुत ही अच्छा ऑर्बिटल स्ट्राइक का भी आपको यूजेज देखने को मिल जाता है लूसिया ऑन द अदर हैंड वेल लूसिया गेट्स डाउन इजी दैट्स अ बिग चेंबर बट लुक आफ्टर सेंसाइज पोजीशन बहुत अच्छा पोजीशन बट ट्रिकी व्हाट हैज ही डन वो देखते ही देखते दो प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन कर दिए राफा विद दिस अग्रेसिव एंगल गेट्स अनदर किल 3v2 का सिचुएशन ट्रिकी के पास अल्टीमेट है स्पाइक प्लांट करना है 10 सेकंड बाकी एंड व्हाट दिस इज द लास्ट थिंग व्हिच यू कुड डू बट somehow Lucia saves the day for the side of killing down Badman अगर उन्होंने डाउन नहीं किया था बैटमैन को तो अब तक एक पोस्ट प्लान सिचुएशन बन चुका रहता बट इसी के साथ पहला राउंड टीम लीथल स्पोर्ट्स के नाम 8 राउंड के बाद एक 7-1 का स्कोर लाइन बनते हुए नजर आए लुक आफ्टर ट्रिकी ये किल अगर नहीं निकालते तो आई थिंक पूरी तरीके से लीथल स्पोर्ट्स के पास ही एडवांटेज था हर बार वो मैप के ऑड्स पूरी तरीके से चेंज होते हुए नजर आए बट इन द एंड इट वाज द टाइम व्हिच डिसाइडेड कि यू आर आउट ऑफ टाइम एंड दैट्स अ बिग एडवांटेज फॉर लीथल स्पोर्ट्स बिकॉज वो नाइटफॉल का अल्टीमेट उनको पूरी तरीके से हेल्प किया था टू डिनाई द A side execution. Definitely, that was a beautiful ultimate coming in from Mazil over here. But the moment we saw the race take a double kill right there on the lamp side, I thought it was game, and Android too late to be taking that teleporter, so it's going to be a man advantage for Middle Esports too early in the round. This time around, I think it's going to be a fast and swift execution coming in from Middle Esports. There we go. We have Rafa taking down Vexy, so it's going to be a 4v4 situation again. Mazil makes sure to take down Buster, and easy though takes down the Rafa. So it's a 3v3 situation again. The trade outs are coming beautifully, but Middle Esports this time around has been denied the execution of side B. And we are actually, oh my god, no way, Mazil, you did that. Damn, that's a game. I'll say round changing kill, isn't it? Because Easy के पास अब सिर्फ 4 bullets बचे हुए and oh, that flick was insane. If that could have been a headshot, तो शायद मैं अपना मन बदल देता ब्राजील के शॉट के द्वारा. That is a headshot. What have you done? That's another one for the side of Easy. Headshot पे headshot पॉपिंग कर रहे. Man, this guy, someone save him from his amazing ability to make sure कि वो एक unthinkable kill को अपने नाम करते. एक और एक headshot का चांस बन सकता था. Sansa was in crosses, but अब यहाँ पे 1v1 के situation में देखिए HP बहुत ज़्यादा कम है. Well, he has the dash available, but somehow he dashes into his own crosshair, and Batman is going to be the one who will take him down. 30 HP के बावजूद यहाँ पे 1v1 में अपने साइड से अपने टीम के एडवांटेज पे रखा. बट आई बिलीव ये एक राउंड में कितना कुछ हमें देखने को मिले. 2 से ज्यादा अल्टीमेट आपको ऑनलाइन आते हुए देखने को मिले. Easy came in with one of the most round-changing kills. Marzel with this amazing whack kill, to be honest. But man, this shot will really be remembered for times and times unless we see another such flick. But in the end, Sensei, he tried his best, but things are always not go in your favor because map of bind hai hi kuch acha. Bilkul. I mean, till the again, this is what we're talking about, right? The first kills, like पहले दूसरे kill के वक्त we still think the Lethal Esports just got it, but Middle Esports, they just whip out whatever skills they have hiding up their sleeves and they just get those rounds for themselves. Okay, Mazil managing to get the info that he needed. Oh, and he's going to peek again. Let's see if that peek works out. Easy has actually backed out from that angle. He knows for the fact that he cannot be losing duel over here. And there we go. Tricky takes a first kill on Android, but Rafa, quick on his feet, takes out Tricky. So again, we have a 4v4 situation right in the beginning of the map. Marzil, oh, so good. It could have been so good if he could have gotten the kills, but no, Buster is going to be the one to bust him out of the map right now. Easy on the other hand, he gets taken down by Lucia. Oh, the ultimate has been triggered from Brimstone, but Vexy over here, he's going to get the kill, and it's a 2v3 situation.
situation. Sensei holding on to the side. Rafa, he could have done so much with those flash the people, but nope. Vexi is going to be the one to end that round, and again, one more round of in favor of Medal Esports. I mean, it's just they just keep going. A scoreline of 1-9. That's a big difference. And the last thing which we can see is a 9-3 scoreline. To activate the curse, to make sure that there's still a hope that Lethal Esports अपने attacking side में है, तब थोड़े मौके बना पाए in case they win or lose the pistol round. सेंसा एक बार फिर ब्लेड स्टॉर्म्स के साथ आ चुकी है, बट पार्टी यहाँ पे अभी बुलाया गया है रेस के द्वारा. तो शो स्टॉपर इज अप. सेंसा अपने अल्टीमेट से एक किल निकालेंगे, बट वो डैश आई डोंट नो अगर उसकी जरूरत थी कि नहीं, बट एज अ वेट ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब. टीम लीथल ई-स्पोर्ट्स वो अपने दूसरे राउंड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, बट वेट, लेट्स नॉट कॉल इट ऑफ दैट अर्ली. इजी अभी भी सर्वर में अलाइव आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड द बिग एडवांटेज इज कि शायद उनके पास स्पाइक अभी नहीं देखने को मिल रहा. तो लीथल ई-स्पोर्ट्स को स्पाइक ना होने के बावजूद स्पाइक को बहुत बखूबी से उन्होंने गार्ड किया. नसी के रहते 9-2 का स्कोर लाइन अब बन चुका है. मेडल ई-स्पोर्ट्स सारे के सारे अल्टीमेट्स उनके हो चुके हैं समाप्त. लीथल के पास सिर्फ एक ही अल्टीमेट है जो है डायमेंशनल ड्रिफ्ट, एंड बाकी के अल्टीमेट्स हमें इतने ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे. सो दिस रियली प्रूव्स कि द 9-3 कुड बी अ पॉसिबल आउटकम. Bilkul, and I am pretty sure the legal esports is counting on that number because that curse is real and we've witnessed it. So let's see if lethal esport manages to turn things around for themselves. There comes the operator being whipped out from Sensei. Ooh, that flash could have been bad, but definitely given out his position. Pretty sure Easy is going to be extra careful while peeking in on that side, and Sensei, he just keeps losing on times to actually take a first pick on long. And will he be able to do that? Yes, he actually takes down Easy. Now they have to be extra careful because we actually have kind of a 3-man stack towards the B side. Let's see if that just works out for these guys. Yup. लूसिया बहुत कॉर्नर पोजीशन पे होल्ड करके रख रहे हैं. उनको पता है कि ये एक अनएंटिसिपेटेड पुश है, बट वेट, ही जस्ट फेक्स आउट हिज टेलीपोर्ट. अब ये ब्लू मार्क देखने के बाद मेडल ई-स्पोर्ट्स उनका एंगल समझ चुकी रहेगी, बट लूसिया डोंट डाई अनदर टाइम. वेल, सैचल करके यहाँ पे घुसने का प्रयास. ट्रिकी इज ऑलरेडी इनसाइड द साइड, बट समहाउ एंड्रॉइड अपना बेस्ट कर रहे कि वो होल्ड कर सके. ट्रिकी बिल्कुल भी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे लीथल ई-स्पोर्ट्स के लिए सेंसा इज गोना कम to rescue, and the 9-3 curse is here, which we talked about. Bilkul, and 9-3 curse is here. Let's see how the second half actually goes in for Lethal Esports. It's going to be a fresh start for them, and I'm hoping that they manage to turn around things for themselves. Here we go. Tricky has definitely been popping off. Tarun. I mean, the way he satcheled into the side, the way he's gotten those crucial kills is just beautiful. He's been all around the map and he's just been beautiful with those shots. So let's see if he manages to keep on that streak in the second half as well. यप, देखिए सेकेंड मैच आई बिलीव सेकेंड मैप होने वाला है फ्रैक्चर का, तो उसके पहले अगर मेडल ई-स्पोर्ट्स अपना पहला विन दर्ज कर देती है तो एडवांटेज रहेगा उनके लिए. दे डू नॉट वांट दैट कमबैक टू हैपन, बट सेंसाई नेड पेंट शेल एंड दैट वाज इनफ, एंड देन बस्टर कम्स इन जो यहाँ पे असिस्ट भी पूरी तरीके से कैरी ऑन करेंगे. ट्रिकी की एचपी उतनी ज्यादा कम नहीं है, बट उन्होंने जितना कोलैटरल किया है यहाँ पे, जो डैमेज उधर डेल किया अपने एबिलिटीज के साथ, दैट्स जस्ट ब्रिलियंट. ट्रिकी ऑन द अदर हैंड राफा को भी डाउन करेंगे. दो प्लेयर्स की एचपी थोड़ी ज्यादा कम है, बट उतनी कम आपको मार्जिल की भी एचपी देखने को मिलने वाली है. ही हैज अ गुड एबिलिटी ऑनलाइन विथ हर, बट क्या वो एबिलिटी के साथ ही साथ एक दो पिक्स निकाल पाएंगे? बिकॉज एक फ्लॉलेस की तरफ बढ़ते हुए मेडल ई-स्पोर्ट्स को रोक पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा है. एंड हियर वी गो, स्टार्ट थिंग्स ऑफ विद द फ्लॉलेस 9-3 कर्स हु कहते हुए यहाँ पे मेडल ई-स्पोर्ट्स ने, तो मैं कहूंगा 10th राउंड सिक्योर कर लिया. डबल डिजिट्स आ चुके, तो कॉन्फिडेंस भी आपको उतने ही डबल लेवल पे देखने को मिलेगा.
Bilkul, bilkul. But actually, I was hoping on to see Lethal Esports taking this round because the double initiator, double duelist would have actually, helped them out. You would think, but things seem to be being a little off for Lethal Esports today. No problem. We still have two more maps to go, and actually a couple more rounds to go. So a 10-3 score line. Looks like Metal Esports is stepping towards a victory, a kill by kill. The first kill coming Wow. in from Metal Esports side, but Wow. beautiful couple shots from Mazil. Is he going to get that third kill as well? Is the question. Let's see. And they almost have the side. Android goes in for the kill. Buster is taken down. Not before he takes down Sensei. So a 3v2 situation, and looks like Lethal Esports, they definitely can do it this round. जी फेक आउट का थोड़ा यूज यहाँ पे करना चाह रहे थे लीथल esports के बाहर से यहाँ पे इजी को डाउन करेंगे गॉड वेक्सी इज द सिंगल प्लेयर सर्वाइविंग एंड्रॉइड की एचपी बहुत ड्रेन हो चुकी है बट सो इज द एचपी आई से फॉर द साइड ऑफ मार्जिल एज वेल the one person who can rescue is Lucia and he comes up at time. Spectres retrieve कर लिया गया एक thrifty के साथ पहला राउंड आपको flawless दूसरा राउंड thrifty देखने को मिला इसी के रहते Lethal Esports somehow वो जो शुरुआती दो राउंड होते हैं ना जिनकी हम बात करते हैं 1+1 राउंड उसको डिनाई करते हुए आपको देखने को मिली Metal Esports man they just got played I'll say because eventually इतने सारे ट्रिक्स जो लेके आई थी Lethal Esports ने अपने टेबल पे that was just quite amazing but let's start off with the round number 14 which is going to be played right here right now पहला बाय राउंड Lethal Esports का Metal Esports after losing that round they are forced down to play just on an eco but this is the time where Lethal Esports have their chance to make sure कि ऐसे ही एक एक राउंड अपने साइड से निकालते रहे लूसिया अपना पहला फ्रैग निकाल लेंगे ट्रिकी को डाउन किया जाएगा एक अनकॉल्ड पुश बट यू नो दैट्स व्हाट यू से व्हेनेवर यू प्ले ऑन एन इको यू गोट टू प्ले इट फास्ट एंड अगर आपका बाय राउंड है तो थोड़ा स्लो एंड स्टेडी आपको खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है Uh, Definitely. And we have Team Lethal Esports actually going in towards side B. And easy. He could have actually easily gotten that kill if it wasn't up to Android's ultimate, teleporter over there. Rafa holding on side, making sure there's no entry coming in. But Android taken down easy. Batman, on the other hand, takes down Lucia. So it's a 4v3 situation. Still very doable for Metal Esports. Vixie holding on to that with shorty and gets a kill on Marzel. That was dirty. Sensei though gets busted down. Badman. There's a back and forth going on. Sensei gets taken down. Android has a kill on Badman. So it's a 2v1 situation. But scratch that 2v1 down to 2-0. So another round in favor of Lethal Esports. They just got a momentum right now, even though they're losing on that guns. They definitely Yep. are scoring those points for themselves, which is really crucial right now, and they have a comfortable buy, so there's nothing for them to worry. But Metal Esports, finally they have a full buy. This is the time for them to make a change and take a step further towards victory, because they seem to be losing a couple of rounds consecutively. Could be a hit on a little bit of confidence. यप श्योरली एंड आई थिंक एक बहुत अच्छा एडवांटेज जो यहाँ मेडल के लिए बन सकता था इकोनॉमिकल सिचुएशन पे उसको ट्रिकी ने डिनाई किया अपना पेंशियल यहाँ पे लेना लाइक सही समझा अपने साइड से मेक श्योर किया कि वो अपने एबिलिटी को ले रहे बट फॉर ओवर डबल किल कमिंग इन ट्रिकी इज गोना मेक श्योर कि वो सारे के सारे हेडशॉट पॉप करेंगे वो डिफेंडिंग एडवांटेज दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी प्लेड द क्रॉस फायर वाज अमेजिंग बट दैट्स वेयर राफा कम्स इन दो किल निकाल लिया एंड दी एचपी जो उन्होंने इनटेक की वो इतनी भी नहीं उनके पास अभी भी 90 एचपी है टू सर्वाइव इजी को अगर डाउन करेंगे तो मौका बन पाएगा बट इजी टेक्स हिम डाउन इंस्टेड वेल दैट्स द 11th राउंड द 1-1 is up for the side of Team Metal Esports just 1 point away from getting that match point and पहला ही मैप इतना ज्यादा डोमिनेटिवली जो गया है टीम Metal Esports के पास वो बहुत बड़ा एडवांटेज देगा उनको एक अपर हैंड देगा कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके सेमीफाइनल 2 को क्लोज डाउन करे एंड लीथल Esports को मैप 3 में अपने एडवांटेज वाले मैप पे जाने से पूरी तरीके से डिनाइल रखे है एज आई मेंशन पिछले राउंड पे ट्रिकी की मैं बात कर रहा था उन्होंने वो पेंशिल लिया उन्होंने यू नो वो सैचल्स एंड ही चूज टू गो विद द बूम बॉर्ड
rather than going on for a heavy armor. And heavy armor आपको भी पता है कितना ज़्यादा important होता है वो 25 extra HP के लिए. We often tend to pay 600 more creds, but Red for now, Easy comes up with a kill and Marcel has been denied. This is the worst start for the side of Lethal Esports as they not only can be on the verge of losing their first map, but also ये round पे भी अपना advantage गवा देंगे because Marcel was the one जिनका ultimate online देखने को मिल रहा था हमें. Bilkul, and Lucia just missed a death, though his cell was still on a very low HP. On the other hand, Easy stops that push coming in from Rafa, gets a kill on its 3v5 situation. Middle East was still on an advantage, and they just holding on to the side so beautifully. We don't see any over aggression coming in from their side, but the aggression from Sensei, who's gonna stop that? He's got control over side A. He's got 2 kills for himself, so he brings that man advantage down, and it's 3v3 situation. The time's ticking. The spike is rotating towards A side. Let's see if they manage to put down the spike on time. Android, he's in a dimensional drift, takes down all the information that he can. He knows for the fact that there's a push coming in towards him, and all right, a tricky, a beautiful game on Lucia. Sensei with a third kill on Tricky, but Vexy just ending him on its tracks. It's a 1v2 situation, and Vexy is pretty low on his health, gets taken down. No more advantage for Middle Esports. It's a 1v1 situation. Easy, he has to take that spike down, and along with him, the Android. Oh But my nope, god. Android, very crisp headshot coming in from him. A beautiful clutch. I mean, that dimensional drift definitely gave him all the information that he needed. He exited the dimensional drift on time. Beautiful execution. And I mean, Middle Esports, they definitely had a beautiful advantage, but Sensei, that aggression, just beautiful. I mean, Sensei has just bought back that entire round. He just saved the Titanic right there. A 6-11 score line. तीन अल्टीमेट दोनों टीम्स के रिस्पेक्टिवली ऑनलाइन देखने को मिल रहा है. लीथल ई-स्पोर्ट्स सेंसाई गोज इनटू प्लेइंग विद ब्लेड स्टॉर्म. एंड देखिए काउंटर में क्या सुनने को मिला. टूर दे फोर्स यहाँ पे हार चुके हैं मिडिल ई-स्पोर्ट्स के द्वारा. द लास्ट टाइम देयर वाज अ टूर दे फोर्स, इट वाज अ ग्रेट एडवांटेज, बट व्हाट देयर कम्स लूसिया विद दैट अल्टीमेट. एंड इसी के साथ आपको फोर्थ लाइन रोलिंग थंडर अल्टीमेट राउंड की हम बात कर रहे थे. 6 के 6 अल्टीमेट अभी के लिए यूज हो चुके हैं. लीथल ई-स्पोर्ट्स इज डाउन टू 3 प्लेयर्स, बट लूसिया इज एट अ ग्रेट पोजीशन. ये पोजीशन के बाद विफ नहीं करना था, एंड विफ किया तो उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा. नाउ डाउन टू 2 प्लेयर्स. उनके पास एक इंसेंडरी एंड द स्पाइक इज गोइंग टू बी प्लांटेड, बट Marzen only good for 1. This leaves us with only Lucia. Lucia gets 1 but is denied from the 2. They force, and the match point is off as Middle Esports, they go on with the 12th round victory. What a brilliant investment of round it was. डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा chaotic राउंड था. 6 अल्टीमेट एक राउंड में यूज होते हुए, we definitely knew for the fact that so with so much invested, that was one of the crucial rounds of the game, and definitely can change the game and whole. And now we are on the score line of 6-12 Middle or Esports on their match point. Definitely very close to victory. And Lethal Esports, they barely have a goodbye. I mean, I wouldn't even call it a goodbye, it's a bye. Let's see what can they work out with it. I mean, we have seen them do much more with even less, so definitely can do a lot. But if we have them going against Middle Esports, who have been actually contesting them on every point event. There we go. First kill coming in from Tricky, but Lucia over here making sure he trades his friend out or right on time. We are seeing Marzel put down the spike. Rafa gets a kill on Buster, so putting an advantage for themselves, but not for long, because Badman is the one who is going to be spotting him out and taking him down. As Easy gets the kill on Lucia, the round seems to be slipping away from them, but not anymore. Marzel gets a kill on Badman, and the last one as well. They get this round. They get this round for beautiful, beautiful, beautiful execution. I mean, that retake seemed almost, done. But no. Lethal Esports, they just denied it, held on to the side beautifully with whatever little they had to work with, and got around for themselves.
I mean, Marzil इतनी कम एचपी होने के बावजूद आई डोंट नो हाउ अग्रेसिव ही डिड मैनेज टू प्ले, बिकॉज अक्सर आप ऐसे समय पे जाओगे कि आप एक निंजा पोजीशन पे रहो जहाँ पे यू आर लेटिंग योर ओपोनेंट्स टू कम एंड देन प्ले ऑन अ डिफ्यूजल, बट वेल नॉनदलेस सभी के लिए मिडिल ई स्पोर्ट्स एक बार फिर राउंड की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। बस्टर कुड हैव ऑलमोस्ट हैव बीन स्पॉटेड। राफा ऑन दी अदर हैंड इजी को स्पॉट जरूर किया, बट इजी टू द फॉर्स उनके पास यहाँ पे ना होने के बावजूद रांधे का यूज हमें देखने को मिलता है। वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल नजर आई। एंड्रॉइड विथ यूरू इज जस्ट टीपिंग ऑल ओवर द साइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इजी आते हैं सामने, बट सेंसाई के द्वारा डाउन हो जाएंगे। बैडमैन ऑन द अदर राफा को डाउन करेंगे। बैडमैन अगर एक और एक नॉक निकल जाता है, किल निकल जाता है, तो यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज बन पाएगा, बट गॉड वेक्सी डिनाइंग दैट नाउ हैज अ चांस टू रिट्रीव अ वैंडल। That's a big hero vandal on his hand. मेडल की बात करें, डिकी के पास यहाँ पे जज आपको देखने को मिलता है। सारे प्लेयर्स इंस्टेंटली टीपी करके यहाँ पे अब निकलने का मौका बना रहे थे, बट एंड्रॉइड एंटिसिपेटिंग कि ये एक बहुत ही बड़ा सिचुएशन है जहाँ पे उनको मेक श्योर करना है कि वो थोड़े वेपन्स एटलीस्ट डैमेज करें विदाउट इवन गिविंग दैट टीपी साउंड। वो बाहर तो आ चुके हैं, बट वो डोर ओपन होने का जरूर यहाँ पे एक साउंड आया होगा। Lethal Esports, they have the round. They do not want to miss on to that, and yes, they do. 8-12 is the scoreline. Comeback की उम्मीद अभी भी है, but percentage and odds बहुत ज़्यादा unfavorable नजर आ रहे, because anytime Middle Esports they get those ultimate online, this could be just round changing. बिल्कुल। और एंड्रॉइड के द्वारा जो होल्ड किया गया था टेलीपोर्टर के अंदर का, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एंटिसिपेट किया था नेक्स्ट मूव ऑफ एनिमी, एंड इट एक्चुअली वर्कड आउट प्रीटी वेल बिकॉज a lot of players from Lethal Esports were pretty low on health, so it was definitely a doable round for Middle Esports, but Android just ending their hopes right there. And again, we are going into the round number 21. Let's see who is going to be the one taking advantage this time around. We again have the deadly crossfire towards Showers. Let's see if this time they make any difference again. Android very low Oh. on health, but manages to take down Tricky, and which will maybe force out Buster to move out. But no, Buster makes sure to get a one kill before he does that. Lucia though trips him out. Easy is the one who is going to be getting a kill on Mars. So there's a rotation coming in, and that's what he expects. Easy, not expecting Android over there, or maybe he is because he takes him down. So a 1v3 situation looks very unfavorable but for Rafa with just frenzy, but Oh. he almost did that. A beautiful round coming in from Lethal Esports, but there we have it. We have the winners of the first map of semi-finals number 2, and that is going to be Middle Esports. I think that was indeed one great hope for comeback. Lethal Esports जरूर उन्होंने मैप हारा, बट उन्होंने अपनी पोटेंशियल को पूरी तरीके से दिखाया कि किस तरीके से वो यहाँ पे काबिलियत रखती है। अपने मैपिंग ना होने के बावजूद, मैच पॉइंट गंवाने के बावजूद एक उम्मीद रखने के लिए कि वो ऐसे शेरिफ्स एंड इको बाय पे भी अपने साइड से पूरी तरीके से मौका बना सकते हैं। आई विल से देयर वाज अ ह्यूज चेंज ऑफ मार्जिल नॉट गोइंग ऑन विद द चेम्बर, इंस्टेड ही वेंट ऑन विद अ फेड। We saw a Yoru coming in from the side of Android. अगर वो एक सेंटिनल होते तो शायद गेम कुछ और ही आपको देखने को मिल पाता, but nonetheless it was the map pick of Middle Esports, so let's leave it that way. Second map है Lethal Esports का pick। 1-0 के डिसएडवांटेज के बाद अपने मैप पे एक फ्रैक्चर में क्या वो अपने साइड से एक इक्वलाइजर रच पाएंगे कि नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। एंड वी आर क्वाइट एक्साइटेड टू गो ऑन फॉर अ मैप 3 ऑफ एशियन। सो बिफोर दैट, how are you feeling after witnessing the map one? Is it team Lethal Esports or is it team Middle Esports जिसका आपको like लग रहा है बहुत ज्यादा एडवांटेज है एंड प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रैंड फाइनल्स में अपनी जगह बना पाए? I wouldn't like to comment on that yet because both the teams showed such great performance. I mean, Middle Esports जो starting line create करी उन्होंने 9-3 तक पहुंचे, but again, Lethal Esports was just so good. They almost made a comeback when coming from getting 5 rounds when you lose the first round itself. That was beautiful, but I think they still have a lot to perform to show us, and we'll be waiting for that right after this break. We'll be coming back to map number 2, and that is going to be Ascent, right?
Yep. We are going to see Ace in this entire BO3. Followed next map is going to be definitely one amazing map of Lethal Esports pick. So I'm just hoping to see if Lethal Esports अपने pick पे जरूर like advantage बना पाया नहीं. But before that, let's call on for a quick ad break, I believe, and इसी के रहते आप अपने हमारे साथ बने रहिए guys, cause map 2 पे एक बार फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे.
my love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you crying, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye.
second to take a breath, to keep me guessing with what he said. You're in my head. We're under pressure, we're sinking deep like stormy weather. Can't seem to breathe when you're with me. If you're gonna break me, I know I won't stay. I don't wanna wait here. You push me away. If you're gonna choose, you don't know what to do. I don't wanna lose you. I don't wanna lose me. All right, guys, we are back with map number two of semifinals number two between Metal Esports and Lethal Esports. We just witnessed them fight it out in Bind, and the first map was won by Metal Esports. तो वो बहुत ही खूबसूरत मैच देखने के बाद we are ready for fracture. Like we were talking about it, it's an unconventional pick, and I'm Yep. actually waiting and hoping Lethal Esports has some beautiful tricks that they can show us in this map. What do you think about this, Yep. Afghan? आई थिंक लीथल esports डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जब आप बात करते हो फ्रैक्चर जैसे मैप की एंड पिछले कुछ शोडाउन्स की भी अगर हम बात करें तो मिडल esports एंड लीथल esports की दोनों बार मैचेस में Lethal Esports were the one who managed to come up on top, but with a 13-11 scoreline. Only once for a moment आपको Middle Esports इस मैप पे जीतते हुए नजर आई, and that's only because they have the defending advantage. And guess what? Defending advantage अभी भी उन्हीं के साथ बरकरार रहेगा. First half पे आपको फ्रैक्चर के मैप पे डिफेंड करते हुए फिलहाल आपको देखने को मिलेगी Middle Esports. But before we hop on to the second map, let's talk about some of the stats. Let's look at the scoreboard and also some numbers out there कि किस तरीके से हर एक प्लेयर का आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला बाइंड पे. Bilkul. And as we were talking about, Tricky just popped off all during bind, even when they were in attackers, even in the defenders. We saw a beautiful game coming in from him and easy as well. Yep. Those beautiful shots, those beautiful crossfires they were creating, it was just amazing to watch. Yep, and I think Tricky actually top off the charts with a total of 26 total kills. That's a big advantage, I'd say. Easy KB19 आपको देखने को मिले. Buster the Breach did a good job. But if you talk about Lethal Esports के हर एक player, they stepped up together. You see the margin between the number one and the last fifth player, आपको 16 और 13 के बीच में वो बस 14 and 15 का फर्क देखने को मिलने वाला है. That's how close the margin was if you talk about the kills. But अगर हम बात करें objective wins की, हर एक लीथल esports के विन जो है आपको वो ऑब्जेक्टिव विंस पे देखने को मिले, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग. हेड टू हेड की तरफ बढ़े तो 16 किल्स के साथ लूसिया आपको सबसे बेहतरीन प्लेयर इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस देखने को मिले फ्रॉम लीथल्स. बट मेडल esports नॉनदलेस. हम ट्रिकी की बात कर रहे थे. ट्रिकी इज द वन जो आपको मेडल esports से शाइन आउट करते हुए नजर आएंगे. टोटल केडीआर में जरूर यहाँ पे डिफरेंस है, बट असिस्ट की बात करें तो वो भी एज अ रेस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहेगा. लूसिया भी यहाँ पे अपने साइड से चाहेंगे कि फ्रैक्चर के मैप पे अपनी एजेंट कॉम्पोजिशन में शायद एक बार फिर योरू को एंटरटेन ना करे, बिकॉज योरू हैज बीन दैट वन प्लेयर जिससे आप हर बार वो एडवांटेज तो निकाल पाए बट उतना ही बड़ा डिसएडवांटेज गया, बिकॉज वी डिड सो कि स्कोर लाइन जो है वो बहुत क्लोज 13-8 पे आया था मानसवी. बट taking a back at the start, it was a 9-1 scoreline which we started off with. 7-0 के बाद Lethal Esports ने पहला राउंड जीता था. जब वो 9-1 पे गया तब एक 9-3 का कर्स got added up to that scoreline. So I believe वो इतना बड़ा लीड दे देना अगर स्टार्टिंग में डिनाई हुआ रहता तो बहुत अच्छा मौका था कि Lethal Esports could have had an upper hand.
डेफिनेटली, क्योंकि हमने ये देखा कि अगर ये 9-3 का स्कोर लाइन फर्स्ट हाफ में नहीं बना हुआ होता, एंड द वे Lethal Esports actually went ahead and got 5 rounds for themselves in defensive side when they were actually in जी attacker side, तो अगर एक रूम होता ना तुम्हें उनको थोड़ा सा विगल करने का, टू एक्सपेरिमेंट, they could have actually made a comeback and actually made a difference, but just because they were a little uh, you know I wouldn't say lacking, but well, let's say just lacking when they were in the defensive side. They lost the first map. But, anyways, we are going into the map number 2. That is going to be Fracture. And again, the agent ओके lineups, it's ready for Lethal Esports already. We have a Chamber, we have Breach, we have Neon this time around, and KO. KO is a very good agent on a map like Fracture, because disabling the agents is very important in Fracture, where utilities is all and everything that you depend on. Surely, I'll say you said it quite right. We have like I'd say एक पूरा का पूरा आप एक्सपेक्ट कर सकते थे मिरर एजेंट पे कि जस्ट द डिफरेंस इज द फेड एंड द नियॉन कंट्रोलर में ब्रिमस्टोन को पिक करना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हमें लाइक ये कहूँगा लाइक डिसीजन साबित होते हुए मिल सकता है कायो का एक इनिशिएटर रोल क्या अदा कर पाएंगे हमारे राफा दैट्स गोना बी अ बिग क्वेश्चन बिकॉज काउंटर टू हिम it's also the double initiator itself which is going to be fade and breach on which you have Android by your side जो एक नियॉन के लाइक पिक से खेल रहे हैं अब नियॉन आप जानते हो कितना ही अमेजिंग एजेंट है वो अगर आप अपने टीम के लिए स्पेस क्रिएट करना चाहते हो इन अ मैप लाइक फ्रैक्चर दिस इज द परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट यू कुड कॉल अ जेट जेट आपको जरूर बहुत ही अच्छा स्पेस क्रिएट करने का मौका देती है जो चांस है वो आपको नियॉन के द्वारा भी देखने को मिल जाता है विद दैट ड्रिफ्ट ऑन टॉप ऑफ दैट वी ऑल्सो हैव वन बिग एडवांटेज जो आपको नियॉन के फेवर में देखने को मिलता है इट्स द एबिलिटी ऑफ तो ये सारे एबिलिटी ये सारे अल्टीमेट जरूर एक बहुत अच्छा मौका दे सकती है लीथल ई-स्पोर्ट्स अटैकिंग साइड पे है एंड आई डू बिलीव लाइक आर्ग्यूमेंट्स जरूर ये बात तो होगी कि अटैकर साइड और डिफेंडर साइड इज द मैप बट आई थिंक स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विद एन अटैक साइड एंड देन कमिंग एट द डिफेंसिव साइड एक 1-1 का मैं जरूर स्कोर लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आई डोंट सी दिस गोइंग इन स्ट्रेट एट अ 2-0 इन द सीरीज All right, if that's what you're saying, I mean, we can all predict, but it's up to the teams to show us what they have got. And there we see a push coming in towards arcade. Buster has been spotted out. A lot of utilities being invested. Android gets a kill. Rafa as well gets a kill on Tricky. So they have actually managed to capture side B. And again, post plants is what we are looking at. Sensei gets a kill on God Vexy. Metal Easy is the one who is going to be taking down one more player from Lethal Esports. But again, the mad advantage is in favor of Lethal Esports. That Molly is going to drive back Rafa a little bit, giving a space for Lethal Esports to be working around. But again, concussed Badman couldn't do much. Android is going to be the one to take him down. Again, a 1v3 situation denied for easy. Android is going to be the one taking 3k in the first round itself. A beautiful start for this map from side of Lethal Esports, Tarun. जी हाँ बिल्कुल एंड आई थिंक ये जो शुरुआत मिली है ये शुरुआत के साथ ही साथ थोड़ा मैं कहूँगा लीथल ई-स्पोर्ट्स को ऐसे ही अपने साइड से कोप अप करना पड़ेगा वो फॉलो अप राउंड्स पे भी अक्सर हम देखते हैं कि मिडिल ई-स्पोर्ट्स वाज द वन जिन्होंने पिस्टल राउंड तो सिक्योर किया था बट सेकेंड हाफ में समहाउ डिड नॉट मैनेज टू गेट द अदर राउंड एंड दैट्स वेयर योर एडवांटेज लाइज एंड इफ यू लूज दैट तो आपको खुद एक इको राउंड पे पुश डाउन हो जाना पड़ता है इजी दिस टाइम हेड हंटर है उनके हाथ में नो पॉइंट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है एंड इस 0 पॉइंट के साथ ही साथ somehow वो हेडर्स का सप्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा लीथल ई-स्पोर्ट्स अपने सारे के सारे एबिलिटी से आपको नियॉन के द्वारा लीड होते हुए देखने को मिल रहे बट द ब्लाइंड इज जस्ट फिनोमिनल अब आप दोनों ब्लाइंड गवा चुके हो प्लस आपने एक भी वैल्यू नहीं निकाली तो दैट्स अ बिग डिसएडवांटेज बट नॉनदलेस पूरा साइड कंट्रोल अब हाथ में है लीथल ई-स्पोर्ट्स मौका है उनके पास कि अब अपने पोस्ट प्लान सिचुएशन पे जाए बट पहले किल कंफर्म कर रहे हैं तो चाहते नहीं कि पोस्ट प्लान सिचुएशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किल यहाँ पे गवा बैठे अपने गन्स गवा बैठे टीम एस के द्वारा लीथल ई-स्पोर्ट्स ये राउंड सिक्योर करती है तो दैट्स अ ब्रिलियंट बिगिनिंग फॉर देम
दो राउंड निकल चुका है, आई गेस समवट नंबर वाइज तो 11 और चाहिए, तो 11 और राउंड जस्ट इज ऑल द नीड। मिडिल ई स्पोर्ट्स की बात करें, दो राउंड डाउन जरूर है बट इकोनॉमिकल सिचुएशन में बहुत बड़ा अपर हैंड है। दिस इज द बोनस राउंड कमिंग इन फॉर लिटिल ई स्पोर्ट्स, एंड बिकॉज दैट्स अ बोनस राउंड, दिस इज द टाइम वेयर मिडिल ई स्पोर्ट्स could really come up with some magic and get the first point on board. बिल्कुल मिडिल ई स्पोर्ट्स के लिए ये राउंड काफी ज्यादा क्रूशियल होगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई है इन्होंने दिस टाइम अराउंड एंड बस्टर अगेन गोज ओवर देयर gets detected and gets ambushed by Android. A beautiful kill coming in from Android. He gets a kill. Could have gotten a kill on Bad, but just a little bit of whip. He gets a kill. Rafa is the one who's going to be taking down Tricky. Easy though. He's going to treat out Sensei over here. The 3v3 situation. Lethal Esports यहाँ पे पूरा कंट्रोल लेते हुए साइड B का again. ये तीसरा consecutive round है towards B and Middle Esports still doesn't be seem to keep up over here. यहाँ पे हॉन्ट आ रहा है बट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी Lethal Esports के बारे में इस राउंड मेडल को. And again easy over here trying to be cheeky, goes in directly for that diffuse but not happening. Well, Rafa is alive. Rafa gets taken down by Vexy. A 1v2 situation for him denied by Lucia. Again losing a bye round for Middle Esports is going to be very disadvantageous because again they have to go in for another eco, and on the other hand Middle Esports Lethal Esports, they've just got free guns this time. I think Lethal Esports was really prepared with their agent com. Unlike Middle Esports, हमें because we don't have that neon edition, this is been a difference maker क्योंकि Lethal Esports का वो neon edition बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उनको value create करके दे रहा है. Not only as an initiator but as a duelist, we did compare it directly with the start of a Jed. फिलहाल आर्केड शेरिफ हाथों में है मिडिल के गॉड वेक्सी के. इजी भी यहाँ पे थोड़ा रश कर रहे हैं, चेंबर वर्सेस चेंबर, एंड इजी इज द वन जो सेंसाई को डाउन कर देंगे. व्हाट इज दिस स्टार्ट? Lethal Esports, this is not the beginning that they could have expected, but because अब वो एक फ्रैग निकल चुका है, Team Lethal Esports, haven't only lost a player, but they have lost a weapon to their opponent. And अगर वो रिट्रीव किया जाएगा मिडिल Esports के द्वारा, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिल सकता है कि they can fight off with those Vandal in the semi buy round, जहाँ पे Tricky with Judge and बाकी प्लेयर्स भी आपको थोड़े सेमी बाय पे ही देखने को मिल रहे हैं. और यहाँ पे एक ultimate being put forward. Marzel takes out a kill on Batman over there just with the utilities. Android going in for a kill and managed to take that Rafa down, but he will be resurrected as well. A beautiful execution again for Lethal Esports. यही momentum हमें Middle Esports की तरफ से देखने मिल रहा था पॉइंट पे, and वही momentum के साथ अभी Lethal Esports एक काफी अच्छा खासा लीड बनाए हुए हैं फ्रैक्चर में. So I think the odds are looking pretty well for Lethal in their own pick. Yup, surely, and 4 round का lead है. You're almost like 1/3 on your path. Just 8 more rounds to go for a match point. Middle Esports अब तक पहला राउंड आया नहीं उनके पास, but easy it seems to be. अपने इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्रॉस बाय पे तब्दील करना चाहता है as he goes on to play on his Tour de Force. टूर दे फोर्स का इस्तेमाल. बस्टर यहाँ पे स्पॉट तो नहीं हुए बट ये रिले बहुत ज्यादा डिफरेंस बना सकता है. इजी गेट्स अ किल दिस टाइम. वंस अगेन इट्स गोना बी सेंसर जो डाउन किए जाते हैं, बट वेल रोलिंग थंडर इज इन. एंड्रॉइड इज इन ऑन टू द साइड बट देयर इज ओनली वन गाय टू डिफेंड इन एंड दैट्स गोना बी इजी. क्या इजी अपना 3K के साथ 4K निकाल पाएंगे? ही मिसेस द शॉट बट द बैडमैन इज फ्रॉम द बैकअप एंड ही गेट्स इट इन टाइम. लीथल ईस्पोर्ट्स लूज आउट द अल्टीमेट राउंड जो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज इस राउंड but easy. Man, somehow the Tour de Force saved the day. हम बात कर रहे थे कि उनके पास बाय था, उसके बावजूद वो बाय को डिनाई करने का like सिचुएशन बनता ही नहीं, बिकॉज आप क्रॉस बाय क्यों खेलना चाहोगे अपनी टीम के अगेंस्ट पे. बट इफ ही हैड अ वैंडल, आई एम वेरी श्योर कि वो इतना अमेजिंग अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाते, बिकॉज चेंबर की वो अल्टीमेट पे जो फास्ट रीलोड है, यू गेट टू शूट ईच एंड एवरी बुलेट क्वाइट फायर. द फायर रेट इज क्वाइट एफिशिएंट. वो चीज एक बड़ा डिफरेंस मेकर बना उस राउंड पे. इसी के साथ अब एक काउंटर टूर de force आने वाला लीथल ईस्पोर्ट्स के सेंसाई के द्वारा.
Bilkul, the last round where Lethal Esports did not actually push from the main did cost them a round. But anyways, Medal Esports with the first round on the scoreboard for themselves. Let's see if they can keep up with it this time, because we are seeing the ambush coming in from both the drop side and main. So Marcel just ready to go give in that flash. I think both of them, both this side, they just waiting for each other's comms. And Tricky gets a kill on the Rafa, Marzel, and Android as well. Madman gets a kill on What? Lucia. Madman, the one putting a bullet in Sensei's head. That just ended as soon as it started. Tarun. I'll like surely agree with you on that. Like, क्या हुआ उस राउंड में? इवन आई एम एबल टू जस्ट नॉट अंडरस्टैंड. इतनी अच्छी शुरुआत थी. दे वर ट्राइंग टू कम अप एंड देयर वाज अ स्नैप, बट नॉट फ्रॉम चेम्बर बट फ्रॉम ट्रिकी, कि उन्होंने एक साथ 3 के निकाल लिया. 3 के निकालने के साथ ही साथ उन्होंने मेक श्योर किया कि वो जितना हो सके उतना अपने टीममेट के लिए और फ्रैग निकाल पा रहे. नॉनदलेस सेंसाई केम अप टू रेस्क्यू वन ऑफ द प्लेयर, बट उसके बावजूद उनको खुद यहाँ पे डाउन किया गया. इजी इज अप विद एन ऑपरेटर, बट वो ऑपरेटर को क्या ही बखूबी से डिनाई किया जाएगा लूसिया के द्वारा. वेल दैट्स अ नंबर्स एडवांटेज वंस अगेन. लीथल स्पोर्ट्स 5v4 के सिचुएशन पे अगर वो ये राउंड हार जाती है तो दैट्स गोना बी रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर देयर फैंस. Definitely. खूबसूरत start already मिल चुकी है. Ooh, a beautiful kill coming in from Tricky, but Android, the one who is going to be trading out his teammate very swiftly. Vexy gets a kill on Lucia on the other side of the map, and Android. Oh, all right. Badman still on the side, holding on, making sure that he gets all the information that's happening in the side. Okay, that ultimate is going to definitely drive away Marzel and Android. Oh, but Android spots out Badman first. He gets a kill on him. Marzel on the other hand gets a kill on Vexy on the main side. Now it's all up to Buster to get those kills and clutch this round as well. He knows for the fact that Android might just be hiding in there. Gets a kill on him. 1v1, a breach, Wow. and Buster claims himself to be the better when he gets the third round for Medal Esports. A beautiful retake. I mean, Marcel, if he had a little bit of room to wiggle in there, little bit of more health HP, he could have done more. But that beautiful kill coming in from Android, that trade off, that was really great. That helped them to get into the site at least. And Batman, quick on his feet, he did hold on to the site very well. That did add on finally and got a point for themselves. So 3v4 line, and the distance is looking closer and closer by the time, Tarun. 7 राउंड समाप्त हो चुके हैं. सिर्फ 5 राउंड फिलहाल के लिए रिमेनिंग है. दोनों टीम के पास 2 अल्टीमेट ऑनलाइन एंड दे आर अ राउंड चेंजिंग अल्टीमेट. Well, this time it's the side of Arcade जिसको ही रहते यहाँ पे push किया जा रहा है. Lethal Esports already have the heaven control and the Rolling Thunder is also in. Oh my god, that's looking quite bad for the side of Team Medal, but somehow अभी भी Medal Esports के पास sight है. Stun हो चुके. God, Vexy Buster का advantage बन सकता था अगर वो 2 kill निकालते, but बारी बारी चारों players ने यहाँ पे 4 बेहतरीन frag निकाले and इसी के साथ Rafa up with the 3K. Lethal Esports had just finished the round the moment it started, and that was just an ultimate popping off from the side of Team Medal. वो अल्टीमेट आने के बावजूद रश करने का डिसीजन थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि हमने देखा कि बस्टर बहुत अग्रेसिव खेल रहे थे. वो अग्रेशन रोलिंग थंडर के तुरंत, अगर मैं कहूँगा बाद ही यहाँ पे डाल देते तो सारे प्लेयर्स को वो ऑफ गार्ड कॉट कर सकते थे. बट some I'll say lack of miscommunication, some I'll say lack of synergy right there, जहाँ पे आप उस एक specific round में properly coordinate नहीं कर पा रहे हो, not just with your teammate but with the agent ability, because that's what you bring inside the table. 2 players pushing on from the side of Arcade, 3 players from main this time. B side execution बनाने का मन है Team Medal Esports का, but they are up with that 3 stack. तो Lethal Esports, man, they don't have been expecting this 3 stack. बिल्कुल. और यहाँ पे वापस बहुत खूबसूरत ट्राई यहाँ पे कंट्रोल लेने का, बट Badman and Buster making sure they will stop a Lethal Esports on their track. They managed to get 2 kills, but Marzel going in gets a kill on easy. He's guarding him in very well, but that flash is not going to be useful for him before he gets taken down. Lucia on the other hand though trades his teammate out. Buster gets a kill on Lucia as well as 1v1 situation. Pretty doable for Buster, but let's see if Rafa manages to hold his foot down. Buster being sneaky, pushing
coming in towards the tower, and Rafa, I think he has no clue what's about to hit him. Oh my god. Yep, that's what is about to hit him. Buster gets a beautiful kill on him, a 3K for him, and a round as well. Medal, they just getting, That's they just going back and forth, Tarun. This is beautiful retake coming in from them. I mean, we did told in the beginning कि थर्ड मैप का तो पता नहीं, बट अगर ओवर टाइम जाता है तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग बन जाएगा ये पूरे इवनिंग. You're at the ROG Showdown series powered by Intel, and seems to be this is that one map जो हम potentially overtime map कह सकते हैं. कितना close चल रहा है, though both the teams they're just going toe to toe at this momentum at this pace. Lethal Esports were at the attacking side and they really anticipated an 8-4 score line. 8-4 के स्कोर लाइन मतलब अभी भी बन तो सकता है, बट मेडल ई-स्पोर्ट्स को सारे राउंड हारना पड़ेगा, विच आई एम वेरी श्योर that they would really not be wanting to. बहुत अच्छा push this time from the side of disc and arcade, and एक rolling thunder का investment आ जाता है. Easy snaps away with this amazing rendezvous, but it does not stop Android, and Android might lose his kill to an amazing fragment. बच के निकल जाना ही यहाँ पे बहुत अच्छा सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि अगर वो अपने लाइफ को लूज आउट करते तो वो नंबर्स एडवांटेज भी डिसएडवांटेज बन जाएगा. Oh, bilkul. And there we go. And the nightmare is about to hit Android, and it does. Buster gets a kill on Android. He was already very low. Rafa manages to get a kill even when he is nearsighted. Gets second one. Sensai, on the other hand, gets a kill on Vexy. So they are going to stop that retake very successfully. Buster all by himself. He has to do that, but nope, he's gonna get handed down. A bullet in his head by Sensai, and sixth round for Lethal Esports this time. Just the kill by Android, that was really beautiful. And Rafa, I mean, getting a kill even when he's near-sighted is just adding up to the advantage that they already have right now, Tarun. Man, a 4-1 split this time. Lethal Esports. Okay, a 2-3 split. My bad. Now we haven't yet seen those, arcade presence and fight coming in from Lethal Esports, because they know they have multiple angle to look. But Medal Esports एक बार फिर यहाँ पे aggressive होना चाह रही है, and see, this is the arcade push which we are talking about. But how do you get an headshot after being that stunned out? इतने स्टन आउट होने के बावजूद सेंसा ने हेडशॉट निकाला. वेल, ही इवेंचुअली डिड गॉट ट्रेडेड ऑफ फ्रॉम द साइड ऑफ हिज क्लोन चेंबर इटसेल्फ. नाउ इट्स अ 4v3 सिचुएशन. दो प्लेयर्स आपको बीवेन के द्वारा पुश करते हुए देखने को मिल रहे हैं. वेल, बस्टर ही गेट्स बस्टेड डाउन. ही हैज हिज चांसेस. उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है लूसिया की, एंड यस, मौका मिलेगा, एडवांटेज रहेगा. ही कम्स अप विद द 3K. नियॉन बीइंग द सोलो प्लेयर सर्वाइविंग, retrieves the spike, uses this amazing high gear to make sure कि वो अपने साइड से जितना हो सके उतने स्पीड अप कर पा रहे राउंड के पोस्ट प्लान सिचुएशन को. बट लुक एट दिस बिग ब्रेन प्ले. ही माइट नॉट बी एंटिसिपेटिंग कि दोनों ही प्लेयर्स को ही कैन कॉट ऑफ विद देयर पैंट्स डाउन. Medal Esports, they are anticipating him to either be at site or either be at A site, but now the sound cube is there, and one of the two options are right here. Brimstone might really reach quite soon, but Android की बात करें तो well, he's running a bit low on his bar. 30 seconds remaining. एक open plant का यहाँ पे मैं कहूँगा मौका बन सकता है, but see, that's what I told. Brimstone, it's gonna take him no time to reach out here. अपने teammate का जरूर wait करेंगे वो. Oh, that's a 80 damage already on himself. There comes the incendiary, and इसी के रहते spray down करने का प्रयास था. The round was full of like storytelling moments. Bilkul, Tarun. The moment Android actually left both of these guys, he could have easily gotten those kills. Only the timing and his luck did not support him. But yes, the moment Sensei got that headshot, that was a wow factor indeed. Easy getting these kills. I mean, the trade outs and the back and forth between both these teams is just beautiful story, a beautiful show being put forward by Medal Esports and Lethal Esports, both the teams. We finally have a score line of 5-6. Both the teams, not far away from each other. And मुझे लगता है पूरी मैप के दौरान हमें यही देखने मिलने वाला है. A very close call on every moment. Let's see if this final round is the one where we get to see an equalizer or an advantage for Lethal Esports. Yup, surely Lethal Esports now up with a Tour de Force Ultimate.
एंड सो इज मेडल Esports. दोनों चेंबर्स के पास अपना अल्टीमेट ऑनलाइन है, दोनों ब्रिमस्टोन के पास अपना अल्टीमेट ऑनलाइन है. मेडल Esports के पास एक अपर हैंड है कि अगर पोस्ट प्लान पे खेलना चाहे तो दे हैव द ब्रीच विद द रोलिंग थंडर. Starting things off with a fault line. Neon यहाँ पे aggressive होंगे and Ricky उनको instantly eliminate करेंगे. The orbital strike is right there. Counter में भी orbital strike आपको देखने को मिलता है. Race का ultimate आ चुका है. Lethal Esports is down to Sense and they would not wanna just give him that advantage. There we go, another shot and that's gonna be tricky. Closing down the first half to a 6-all equalizer and Team Metal Esports somehow वो अटैकिंग साइड होने के बावजूद एक बहुत ही अच्छा हाफ उन्होंने अपनी साइड से खेला. रिकवरी देखी इस टीम की. सेंसा दैट वाज एन इनसेन फ्लिक बट ट्रिकी विद दिस अमेजिंग यूज ऑफ हिज अल्टीमेट. मालूम है उनको कि आखिरी राउंड है तो देयर इज नो यूज ऑफ सेविंग दैट अल्टीमेट. ही यूजेस इट एट द करेक्ट टाइम टू गेट नो मोर कैजुअलिटी एंड टू फिनिश हिज राउंड and the entire half off. For the next 12 rounds, we are going to see both the teams compete to be the first team to cross the finish line, जो कि होगा 13वें राउंड का. Well, attacking side पे अभी के लिए Metal Esports है. Defensive side we have Lethal Esports and they have Neon and Chambers. So ये दो players जितना साथ में खेलेंगे मैं कहूँगा उतना ज़्यादा वैल्यू निकल पाएगा. बट Neon for now वो अकेले A side को संभाल रहे हैं. 4 players का स्टैक B पे देखने को मिल रहा है हमें. बिल्कुल. और यहाँ पे इजी की तरफ से द फर्स्ट शॉट बीइंग हिट ऑन सेंसाई इज गोइंग टू मेक हिम वेरी लो बट अ ब्यूटीफुल किल कमिंग ऑन बैटमैन. आई मीन even though he has been hit, he just went in for it. He's like you know, I can still do this. And over here we see Tricky getting the first kill and the second end as well. That nade might just do it for Rafa, or maybe not. Even though flashed, he gets a kill on Tricky. Lucia holding down his photo well gets takes a kill on Buster. Ooh, easy. He just waited for Rafa to turn and then put a bullet in his eye. He just looked into his eyes and just, you know, this is the end for you. And now we have a 2v2 situation. Lucia all the way to the other side. We have Android on the side. Easy, just a missed Android by a second. Now it's all up to Lethal to make sure the spike goes down because the time is ticking. Lucia is trying to maybe rotate, or it just put. No. That was a beautiful distraction created, but had Lucia completely making use of it, gets a round for themselves. I mean, जो ब्यूटीफुली नहीं उन्होंने उधर उसको डिस्ट्रैक्ट किया. लूसिया जिस तरीके से बस एक रोटेशन शो ऑफ कर रहे थे, एंड्रॉइड जिस तरीके से पीछे से स्नीक अप कर गए, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड है लीथल इस पॉइंट पे. You know, it reminds me the time where back in the day we used to, you know, play that tug of war. वो इस पूरे मैप पे आपको देखने को मिल रहा है. यू नो, मेडल Esports, इवन नॉट द मैप बट स्पेशली द राउंड, एडवांटेज था लीथल Esports पे. फिर वो एडवांटेज गया हमारे मेडल Esports पे. लीथल Esports पे इस वजह से क्योंकि सेंसार ने वो पहला फ्रैग निकाला था. द फर्स्ट ब्लड वाज फॉर देम. देन मेडल Esports केम अप ऑन टॉप बट लीथल Esports वाज द वन जो डिनाई करेंगे. एंड कुछ इस तरीके से पूरा राउंड आपको देखने को मिल रहा है. मेडल Esports इज नाउ नॉट हैविंग दैट बाय बट इट डजंट स्टॉप टीम लीथल Esports फ्रॉम गेटिंग अग्रेसिव अगेंस्ट देम. इजी ने एक शॉट जरूर लैंड किया. 55 का डैमेज आपको डील होते हुए नजर आया वो हेड हंटर्स से. बट एक 4v5 के सिचुएशन पे आप पे जब ऑलरेडी वेपनरी नहीं है तो आप साथ में ही खेलना चाहोगे. सो एटलीस्ट यू कैन गेट दोज इनिशियल ट्रेड. A side is now under the control of none other than Breach himself, Marzel, the IGL, the man who leads the team from front line, aftershock and maybe a flashpoint as well. Yep, here we go, a flashpoint here to start things off. Spam किया जा रहा है. Android on side आ चुके हैं and meanwhile Android is just wrecking them with the charge to start things off. दूसरे हाफ की you know शुरुआत एक flawless round के द्वारा आपको देखने को मिलेगी and Lethal Esports now will move on with a 2 round of lead. बिल्कुल. एंड फाइनली अ बाय फॉर मेडल Esports this round. So this round again a very crucial for medal. On the other hand, we have Lethal Esports still playing on the bonus that they had from last round. तो अभी भी Lethal Esports के पास काफी अच्छा चांस है एक लीड बनाए रखने का. On the other hand, medal, you need this round, otherwise the next round is might just go for a toss as well, because you know, playing without a good armory against a team who's as coordinated as Lethal is going to be very difficult. And there we go, a beautiful push coming in from Lethal Esports. They just stopping Metal Esports on tracks. They wouldn't even let them
again come out of the spawn. Tricky though, the first one to get a kill on the side of middle, a 2v4 situation. Rafa gets a kill on Tricky, and now it's just down to one person. That is going to be easy. He's just looking on all angles. He's all alone. He gets spotted, taken down easily by Android by just a classic. So again, Middle Esports losing all their weaponry and Lethal Esports getting free guns. Yep. Lethal Esports. We'll have to see because they have won one of the most important round indeed. If we ever talk about any of those by pistol round hara, it's fine for Medal Esports. Uske baad follow up round bhi hara, that's completely normal because you won the Vandal, you won the heavy armor. बट जब आपके पास हैवी आर्मर है, कंपीटिंग इट अप अगेंस्ट जस्ट दी स्पेक्टर्स, अगर आप हार जाते हो तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज. देयर इज अ कहावत जो हम बचपन में बहुत सुनते थे, सोने पे सुहागा. कुछ उस तरीके से सिचुएशन मेडल ई स्पोर्ट्स ने बना लिया हमारी लीथल ई स्पोर्ट्स को. नाउ नॉट ओनली डू दे हैव 3 राउंड लीड, बट ऑल्सो दे हैव द वैंडल एंड ऑल्सो दे डिड नॉट बॉट इट फ्रॉम देयर ओन मनी. Ricky on the other hand, he uses the paint shell. Marzel उनको कैसे भी he's buying some seconds. Brawler यहाँ पे आ जाता है, but अभी तक कोई भी ultimate आया नहीं है. Okay, the reveal is going to be quite interesting, but tricky. What are we seeing? Team Medal Esports देखते देखते 3 players को down कर देती है. Lethal Esports 3 players stack होने के बावजूद they lose out that entire side to Medal Esports. Still there's a chance कि एक मैं कहूँगा comeback यहाँ पे बन पाए, but ये spam देखने के बाद it's all down to Sensei 150 HP and a dream to make sure कि ये clutch को possible outcome पे ला पाए. But well, they saw things off with a thrifty. I mean, जो round आप पिछली round पे जीत सकते थे वो अभी जीत गए. दे रहा है दुरुस्त है, बस बहुत ही बेहतरीन तरीके से Medal Esports ने इस round को अपने नाम किया and deny किया वो double digits from the start of Lethal Esports. बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत एंट्री देखने मिली हमें मिडल ई स्पोर्ट्स की तरफ से इस राउंड. सो अगेन दे क्लोजिंग इन द डिस्टेंस बिटवीन लीथल ई स्पोर्ट्स एंड मिडल ई स्पोर्ट्स. जो 3 राउंड का डिफरेंस बनाए हुए थे, इट्स डाउन टू 2 राउंड्स. बट अगेन लीथल ई स्पोर्ट्स अ लिटिल मोर क्लोजर टू विक्ट्री than Middle Esports. It's Middle Esports. It's time for them to definitely pull their socks up because otherwise it's going to be too late. Android over here did push in. It could have gotten an easy kill on Buster, but no, Buster was the one who will be taking him down. Batman gets a double kill on the side and the side control as well. Easy takes down the Rafa. So again, Sensei left in a very difficult situation. Tricky just satchels his way in and gets a kill on Sensei. I mean, again, how beautiful, how swift was that execution, Tarun? Oh man, that was indeed one amazing execution. Team Medal Esports एक राउंड और अपने नाम कर चुकी है. That's an 8-9 score line. This is happening once again, that toe-to-toe, that close matchup which we talked about. क्या ये ऑल द वे आपको ओवर टाइम पे जाते हुए देखने को मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है. 3 अल्टीमेट मेडल ई स्पोर्ट्स के पास है, 2 अल्टीमेट के साथ लीथल ई स्पोर्ट्स इस राउंड पे खेलते हुए देखने को मिलेगी. बट डू दे हैव द बाय इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर एट दिस पॉइंट. अल टॉप उठाएंगे तो टू द फोर्स आ सकता है इजी के लिए. इजी गोइंग ऑन फॉर दैट अल टॉप. वेल नो, एक किल भी निकालेंगे तो भी वो अल टॉप का कमी जो है वो पूरा हो जाता है. आर्केड से 3 प्लेयर्स का पुश एंड प्रेजेंस टीम मेडल ई-स्पोर्ट्स के द्वारा. Sensei comes in, but Sensei is the one who gets this frag. A good nightfall along with that. आपको एक ऑर्बिटल स्ट्राइक भी देखने को मिलता है. मेडल ई-स्पोर्ट्स somehow यहाँ पे लूज आउट करते हैं, but there we go, yet another ultimate coming in. This time मेडल ई-स्पोर्ट्स के बैडमैन आपको लूसी अपने क्लोन ब्रिमस्टोन को डाउन करते हुए देखने को मिलेंगे. Android going in with his amazing ultimate. He does not manages to come up on top. अपना overdrive यहाँ पे गवा चुके हैं. This falls down to the single player KO. क्या KO यहाँ पे अपने साइड से कुछ मैजिक दिखा पाएंगे? Well, Batman is not gonna let him do that. 9 all का score line up बन चुका है. This was a lot of investment being made from Lethal Esports. They had at least 2 ultimate invested, and इस 2 ultimate के investment के बाद they are only left with some, I'll say, okay, they still have 4 ultimate, I believe. So I think still, Lethal Esports, they had their round, but now the economical situation are still trying to be hampered. हाँ बिल्कुल. और मुझे एक फीलिंग आ रही है कि लीथल esports, as long as they were being aggressively defensive,
things were working out for them, but now that it's time for them to hold down their forts, just make sure that there are no entries from the side of Metal Esports and the retakes. That is what is becoming difficult for Lethal Esports, and which is being cashed out by Metal Esports very well. And Lucy over here just trying to be very very cheeky. This is what I'm talking about. This aggression has worked out for them pretty well so far, but not anymore. Easy, just deleting Lucy out there, and with that Spectre too, you don't have as much of a confidence as you have when you have a Vandal or a Phantom in your hands. There we go, a Rolling Thunder being pushed forward towards a B, which is going to make sure the Lethal Esports is going to come inside to try and stop that execution. Since I gets a kill on Easy, and we still don't see the spike going down. A counter ult coming in from a breach over here. We are just waiting for Buster to take the kills, and Android is going to go down. The Rafa is going to go down by Badman. Badman gets a second one on Marzil as well. A beautiful execution just coming in. Tricky, just he'll be trying to take down the Rafa completely, just making sure that possibility of resurrection is deleted. And yep, Sensei, the last one. What just happened? 6-9 was the score line, and they just got hit by a 4 rounds of disadvantage. Yes, it was a round जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा economical advantage तो नहीं देखने को मिल रहा था, but KO के ऊपर साचल डाल के he was really trying to make sure that he is not giving any chance to Lethal to make sure कि वो उनको resurrect कर पा रहे उस ultimate के position से. Null command ज़रूर था, but they weren't able to just null down their disadvantages, which has to be considered. लीथल esports डिफेंसिव साइड है. मेडल esports ने जब से अपना बाय राउंड यहाँ पे खोया है उसके बाद ऑलमोस्ट सारे राउंड वो जीतते आ रहे हैं. देखिए शुरुआत हुई हमारे राउंड नंबर 20 की, एंड स्टार्टिंग में ही बैडमैन अपने साइड से वो अमेजिंग ओपनिंग निकाल चुके. लीथल esports defensive side, they have to look after multiple angle, and on top of that they are on a disadvantage. But Marzil यहाँ पे एक बहुत ही crucial pick निकालेंगे. There is a showstopper. ट्रिकी अपनी साइड से मौका जाते हैं कि वो इस showstopper का यूज पूरा अच्छा निकाल पाए. Lethal esports, well Marzil gets a kill, but God Vexy यहाँ पे Marzil ही नहीं राफा को भी डाउन करेंगे. Lethal esports के बस सेंसा आपको अलाइव देखने को मिलेंगे. Now 1v3 situation. Well, the HP is not looking that great. Metal Esports still can have a chance to be clutched out, but Sensei, it's not the issue that he has to get it clutched, it's the issue of his economical condition, and on top of that, he has an operator, an investment of 4,700 creds. To be honest, इतने ज़्यादा investment के बाद, I don't think कि उन्होंने बिल्कुल भी अपना मन रखा था retake का. बिल्कुल. और मिडल ईस्पोर्ट्स डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना चाहती है. दे आर आउट फॉर हिज ब्लड एंड लुकिंग फॉर एनी possible way to get that gun out of his hands. And again we see Vexy going in for it, but Sensei making sure he holds on to that gun into the next round as well. Yep. And I think investment of जो रेस का अल्टीमेट था, that was just to create space. And हम अक्सर देखते हैं कि जब भी अटैकर्स का एक एग्जीक्यूशन आता है, they normally go on towards the side. बट इस समय पे वो ऑन साइड नहीं गए थे. इस समय पे उन्होंने मेक श्योर किया कि वो अपने साइड से पूरे टीममेट को स्प्रेड आउट रख रहे हैं, जिस वजह से उनको वो अंडर हेवन का कंट्रोल मिला, जिस वजह से उनको वो राफ्टर्स का कंट्रोल देखने को मिला. इतने सारे स्क्रीन्स कंट्रोल के बाद फाइनली टीम मेडल ईस्पोर्ट्स डिसाइडेड टू गो फॉर अ पोस्ट प्लान. लीथल ईस्पोर्ट्स एक बार फिर थोड़े डिसएडवांटेज में प्रॉब्लम का इस्तेमाल किया जाएगा, बट एंड्रॉइड ही ओनली हैज दैट जस्ट टू वर्क विद. फीचर से मार्जिल का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बैकअप, बट ओ माय गॉड लुक आफ्टर एंड्रॉइड पोजिशनिंग बहुत कम है. मेडल के ट्रिकी यहाँ पे 3K निकाल चुके, तो 3K ट्रिकी is quite up for his team trying to step up. Sensei यहाँ पे anticipate कर रहे एक smoke criminal को. Smoke criminal, well he gets anticipated, he gets taken down, but tricky को finally down किया गया. Now it's down to a 2v3 situation. Metal Esports, they have that orbital strike, and look how efficient they take the decision making. वो एक corner plan जाएंगे, default plan बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, cause एक post plan situation पे you would not want to get yourself clutched down. But there's a nightfall ultimate now online. Incendiary is gonna come in. That's the reason कि आप यहाँ पे बहुत unanticipatedly play कर रहे हो. But oh my god, God Vexy gets a kill. Lucia down to 63 HP. He too gets denied. Metal Esports is up with the match point, and अपने ही मैप पिक पे Lethal Esports are on the verge of losing the semi-finale number 2 to Team Metal Esports.
बिल्कुल एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है यहाँ पे लीथल स्पोर्ट्स ने the way they had control when they were actually in attackers or versus the way they're losing control while they are in defense is just very heart wrecking to watch. And Middle Esports, they just one round away from victory. I mean, if they do win this one, they completely deserve it. जो जो momentum उन्होंने create किया है कि after that the first two rounds is just beautiful. And there we go, utility is coming in. Tricky is going to lose his life, though he's not going to be allowed to be cheeky anymore, though Easy knows for the fact that Android might still be around the corner, gets his kill and is clearing angles for his teammates. Rafa gets taken down for a very low HP, but not before he is going to take down Vex. Easy as well. Easy goes down, but then ultimate coming in from Badman and busting out a Marcel. A win for Medal Esports, Middle a Esports. 2-0 line. I mean, Tarun, we were actually expecting to go into map number 3, but Middle they just switched on something. I mean, with like a switch, and just went in on the second half, got a win for themselves, and deserving victory. I still remember, saying कि एक 4-0 का स्कोर लाइन है, 4-0 का स्कोर लाइन है, जहाँ पे वो 1/3 अपने जर्नी तक पहुंच चुके, 2/3 ऑफ द जर्नी और तय करनी है. फर्स्ट हाफ के आते आते हमने देखा 6 राउंड निकाल चुकी थी मिडिल ई स्पोर्ट्स में, वेयर आफ्टर दैट लीथल ई स्पोर्ट्स जस्ट मैनेज टू गेट 2 राउंड्स आफ्टर दैट 4-0 स्कोर लाइन. ऑलमोस्ट 13 राउंड जीत के आगे निकली हमारी मिडिल ई स्पोर्ट्स ने. बट कंपेयरिंग दैट विद द स्कोर लाइन ऑफ लीथल ई स्पोर्ट्स, दे हैड जस्ट 4 राउंड्स इन देयर फेवर, मे बी 5, क्योंकि इट वाज अ 13-9 इन द एंड. बट एक अगर कमबैक की उम्मीद भी होती तो वो इकोनॉमिकल कंडीशंस पूरी तरीके से आपके अगेंस्ट पे जा रही थी. एंड where the biggest mistake lied for Lethal Esports? 6 ऑल था, आपने 6-8 बनाया, 6-9 भी बनाया जब आपने अपने साइड से एक बहुत अमेजिंग बोनस राउंड पे कैपिटलाइज किया. बट द मोमेंट यू गिव दैट थ्रिफ्टी राउंड अवे, थ्रिफ्टी राउंड जो कि पोटेंशियली वो 10th राउंड हो सकता था, उसके बाद हर एक राउंड मिडिल esports ने अपने नाम किया. द मोमेंट दे गॉट अ थ्रिफ्टी, दैट वाज द मोमेंट वेयर दे वर एट अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन देमसेल्फ. एंड उस कॉन्फिडेंस लेवल ने उनको पूरी तरीके से 13th राउंड तक लिमिट रखा. एंड बिकॉज दे ऑलरेडी हैड अ मैप इन देयर फेवर, they closed down the entire semi-final at a 2-0. And I think this is one of the most fastest semi-finals which we got to see, because normally कल के दिन भी आपने देखा मानसवी कितना ज़्यादा competitive था रेकनिंग एंड टीम हेल्थ स्ट्रीक का. Bilkul, bilkul. But I mean, Lethal Esports definitely played very well, but Middle Esports is going to take the cake away and the spot to to the finale that is going to happen tomorrow with Reckoning Esports. And before we go ahead and see all the scores and the stats of this map, let's take a small break, take a breather, and be right back.
All right, ladies and gentlemen, we are back after a break and a beautiful game that went down between Middle Esports and Lethal Esports, to which the victorious ones were Middle Esports. तो ये बहुत ही interesting game था. And what do you think was the advantage that the Middle Esports had over Lethal Esports in both of these maps? I think like one of the main reasons being that they played as a whole, they played as a team, and as we say, teamwork makes the dream work. वो हमें थोड़ा lack होते हुए नजर आए when we talk about Lethal Esports. They had many independent agent. एंड्रॉयड नियॉन के साथ खेल रहे थे जिसमें शुरुआत में ही जस्ट bamboozled the entire team, but then after he was using the same tricks, he was being anticipated and he was being countered off as well. Sansai being played as a chamber, हम हमें उनके द्वारा वो जो एक लेवल की परफॉर्मेंस उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिली. मे बी ही हैड सम बैड डेज. मार्शल ऑन द अदर हैंड, उनको अपने वो टिपिकल एजेंट पिक के साथ द्वारा हमें देखते हुए नहीं मिले. He loves to play a chamber, rather he goes on for a killjoy, but this time he wasn't able to play at his best. Why? Because he had to play a breach. And breach, that too, if you give that agent to Marzel, you know that he's more of a team player rather than being an independent player. So independent players, जो कि हमारे Android थे, all the responsibilities were on their shoulder. Meanwhile, Marzel couldn't just go on alone, because if he loses his angle, if he loses himself, it's a big damage to the side of the entire team in the round. And वो एक एक round भी हमने देखा था मानस में कि कितना close गया था. They eventually lost that 1v1 duel where it was a clutchable situation. They even got clutched at times, जहाँ पे इतने बड़े लीड होने के बावजूद आप अपने साइड से सेकेंड हाफ में एक थ्रिफ्टी होने के बाद पूरा का पूरा हाफ यहाँ पे 39 पे क्लोज डाउन होके हार जाते हो. फर्स्ट मैप पे भी वी सॉ समथिंग सिमिलर हैपनिंग, इजंट इट, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने 9-1 दे दिया and 9-1 के बाद you're coming and coming and coming, but you did not quite reach to your mark, and the curse also did activated. Bilkul, bilkul. So let's have a look on the scorecard and see how what exactly went down stat by stat. There we go. Well, It's no surprise that Tricky is the one who is actually the highest dragon, and Badman as well, just closing in with one less kill than Tricky. I mean, he was beautiful with the way that he played. Those smokes coming in, those usage of the utilities, that was amazingly played by Badman. and as I told, Marzel down to 10 kills, he is something who is way more than that. Only 120 ACS, average combat score हमें उनके द्वारा देखने को मिला. प्लान्स की बात करें तो जरूर अपने ऑब्जेक्टिव विंस पे बहुत अच्छा निर्भर थे. मेडल ई स्पोर्ट्स 39 score line for twice and for the win for them. But Tricky Batman Buster, they had an amazing game today. Easy and God Vexy, even though they might not be at that level of those fragging capabilities which they normally have, because God Vexy को आप जरूर expect करते हो to be in his 20s. He still managed to deliver his team the best of his ACS, and his econ rating is also quite amazing. Android जो duelist नियॉन के द्वारा देखने को मिल रहे थे, just 1 KD for him as 16-16 का kill death है, followed by Rafa who was looking quite strong. Sensa down to 15 kills, followed by Lucia and then Marzel. So it's also not only the players but also the agent pick, and especially it's the map as well, क्योंकि मैप आपने देखा था, पहला मैप भी आपको बाइंड का देखने को मिला, उसके बाद दूसरा मैप भी जो था यहाँ पे उतना ज्यादा कंपेटिटिव गया नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते थे. लीगल स्पोर्ट्स का पिक था, दे वर रेडी विद द एजेंट पिक, बट मे बी दे आर नॉट रेडी विद द स्ट्रैट, क्योंकि बहुत जल्दी एंटिसिपेट होकर मेडल स्पोर्ट्स उनको काउंटर करना बिगिन कर चुकी थी. Bilkul. And here we see the player by player starts, and Tricky definitely on a lead with 20 kills. On the other hand, Rafa with 16 kills, and the deaths look a little similar with KDR of 1.18 on Tricky and 1.07 on Rafa. And even though Rafa did not frag out a lot all during the game, but he was so impactful with his flashes that came in, and those knives, those suppressions that actually worked out pretty well for Lethal Esports, to a point, but well, it just wasn't their day, it seems. And overall kills, we have Tricky dropping the 40 bombs, 46 kills on him in 36 deaths with 12 assists. So overall, he has been and phenomenal players all through out the semi-finals today, Tarun.
And just look after the side of Team Lethal Esports. As we mentioned, Android topping the charts, then Rafa, and then Lucia. There were two iconic players from Lethal Esports whom we always talk about. First, leading the team, it's Marzel. He is quite down, not able to come up with his performance level which we expect from him. And followed by him, it's going to be Sensei, जो कि एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कैलिबर रखने वाले प्लेयर ये। राफा की एक चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगती है कि कुछ हो ना हो वो अपने साइड से वो कंसिस्टेंसी डिलीवर करता है, एंड ही डज दैट एट द वेरी नीडेड टाइम. God Vexy, on the other hand, he is also, like has done the job quite well. And it's not always about the number of kills, which we often talk about, but also the team, as I mentioned, क्योंकि team as a team, Middle Esports were looking quite strong. And if this is how they play the funnel, I don't think कि reckoning इनको रोक बिल्कुल भी पाएगी. Because if Lethal Esports can't stop them, then I don't think if Middle Esports can be stopped from any other team. But MVP आज के दिन रहेंगे हमारे Tricky. क्या ये MVP हमारे टूर्नामेंट के भी बन पाएंगे? Because कल के दिन होने वाला है grand finale of the ROG Showdown series powered by Intel. And what an amazing day we had. Tricky just leading the game. He actually loves to play, with those rage. He actually loves to create the space for himself. And every time जब भी राउंड चेंजिंग सिचुएशन बने थे ना, हमने देखा था मानसवी कि वो 3K 2K 3K consistently Tricky was able to deliver, which was an annoying reason of why Lethal Esports जो राउंड जीत सकती थी वो भी नहीं जीत पाई. Bilkul, and I hope he keeps up with this game because tomorrow is the grand finale and they are going to be facing off Reckoning Esports. And I think after a win with a team like Lethal Esports, definitely Middle Esports are going to be on high spirits and they should maintain it because tomorrow a lot is on stake. A prize pool of 1 lakh in 10 rupees. The winner is going to go home with 70,000 and the runner up is going to go home with 30,000 rupees. And I'm pretty sure both these teams are going to fight tooth and nail for this prize pool. So, guys, with that, we are ending our semi-finals number 2. We will see you guys at the grand finale. This was me, Manasvi, with Tarun, and we are signing off. See you guys tomorrow. Teleport's ready.
Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you